हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन विदाउट एनी डिले। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिक्टेशन लिखें, आपकी डिक्टेशन आपके वर्ड एक्यूरेसी में इन्हेंस हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ruling prohibiting caste based discrimination in the treatment of prisoners is that it required a judgment from the highest court to end colonial practices and systems in prisons. While the court has dealt elaborately with specific rules in the jail manuals of various states and the way in which caste based hierarchy plays a role in allocation of duties, classification of prisoners, and the treatment of certain social groups as habitual offenders. It is quite remarkable that prison authorities and state governments had done so little about these aspects since independence. It is as if the prison system has been out of the reach of the core philosophy of the Constitution. The ushering in of an unequal society, the ending of all forms of discrimination, the prohibition of untouchability in any form, and the abolition of forced labor and exploitation. Responding to journalist Sukanya Santha's writ petition, the court has analyzed the controversial rules and practices in jails in the backdrop of these constitutional objectives. It has ruled such provisions unconstitutional and directed the revision of prison manuals within 3 months. Tracing the history of such rules and practices, the court has noted with much justification in line with their overall approach, the colonial administrator linked caste with prison administrator administration of labor, food, and treatment of prisoners. Not only were menial work and supposedly polluting occupation allocated to prisoners from communities placed lower in the caste hierarchy, some were expected to carry out
their hereditary traits. Within prisons, the court found. On the other hand, the caste privileges of a few placed higher were preserved. Few can disagree with the observation that the notion that an occupation is considered as degrading or menial is an aspect of the caste system and untouchability. The provision that food must be cooked by prisoners from a suitable caste and rules that referred to those from the scavengers class being assigned tasks such as manual scavenging, sweeping, cleaning, violated violated the constitutional prohibition against untouchability. Distribution of labor cannot be solely based on birth. Such rules violated the right to dignity and the right against forced labor and exploitation. The court has favored doing away with vague definition of habitual offenders as they seem to ascribe criminal tendencies to whole tribes, even though the idea of notifying criminal tribes has long been give up, given up. It is time for state governments to respond to the verdict and revisit their laws and regulations related to prisoner administration and put an end to systematic discrimination in an institution that may treat any form of resistance as discipline. फुल स्टॉप तो ये है डिक्टेशन. आज फुल स्पीड है डिक्टेशन की 80 वर्ड पर मिनट. आई थिंक 75 to 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन है. तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर रूल. कल बाय मिस्टेक 80 वर्ड पर मिनट लिख गया था तो उसके लिए सॉरी आपको. 55 to 65 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन था वो. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ग्रामर रूल्स और स्पेलिंग्स में डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी मोस्ट लिखा हो तो इज़ अ, ठीक है, द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट. एस्पेक्ट इज अ नाउन एंड नोट मोस्ट ऑब्जेक्टिव नोटेबल. ठीक, एंड द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड देन नेक्स्ट स्पेलिंग्स ये है डिस्क्रिमिनेशन. DISCRIMINATION डिस्क्रिमिनेशन. ठीक, ये है स्पेलिंग एरर्स में आता है तो ये करेक्ट स्पेलिंग है. एंड नेक्स्ट ग्रामर रूल्स देखा था विद स्पेसिफिक रूल. देखते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक, एबोलिशन किसी भी रूल्स को एबॉलिश उसका ना मानना. ठीक, एबोलिशन. और नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे डू अवे विद एक आया था. ठीक, ये डूइंग अवे विद ये फेवर्ड
डूइंग अवे विथ। आज की स्पेलिंग्स ज़्यादा इसमें स्पेलिंग पे फोकस करिए, क्योंकि ग्रामर के रूल्स ज़्यादातर सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है ग्रामर रूल का, और स्पेलिंग्स ज़्यादा हैं, तो स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड लिखे हों उनके उनका डिक्टेशन में वर्ड्स नहीं क्लियर बन पा रहे हों या वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसका उस जो वर्ड हो उसका आउटलाइन मैं बना करके शॉर्ट वहाँ शॉर्ट्स के रूप में अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो आपको जो नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, प्लीज़ पिन द कमेंट बॉक्स। ओके, टेक केयर।